Hello, how's it going, guys? Welcome back to another video. And before we get into today's video, make sure you guys leave a like rating on this one. Make sure you subscribe. Make sure you comment below what your thoughts are on this World Cup so far and how you think what your predictions are for the World Cup. And follow us on our social media pages for the latest news about cricket. Today's topic is spin bowling, something that's going to be incredibly important this World Cup. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई सारी टीम्स अपने स्पिन बॉलर सही से प्रिपेयर करके लाएं. एंड इंडिया में तो सबको पता ही है कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग होती है. And some critical stadiums, I would say Eden Gardens, Chennai, Indore Stadium, these are kind of famous for their spin pitches. So if you don't have a lot of spin options, you might struggle in those grounds, which is why I think some of the teams are preparing for each stadium very differently. बहुत सारी ऐसी conditions होंगी जहाँ पे पेस बॉलिंग बहुत अच्छी जाएगा, यहाँ पे बैटिंग conditions होंगी बिल्कुल ही बॉलर्स के लिए कोई kind of opportunity नहीं आएगी विकेट्स लेने की. But talking about spin specifically today, we've got to start with India, the home team. They've got great spin options as well, and the way we've kind of picked out on great bowlers जो कि इंडिया के पास बहुत सारे थे, and to a certain extent where we had to drop off with Yuzvendra Chahal just to be able to kind of create a squad which is a balanced squad for this whole World Cup. Starting with Kuldeep Yadav, a complete wicket-taking bowler, almost 2 wickets a game kind of average है उनका. 90 मैचेस में 160 विकेट्स, 25.6 का एवरेज, 5.13 की इकोनॉमी. एंड ये थोड़ी सी एक मिसलीडिंग हो जाती है कभी कभी, वेयर यू थिंक कि 5.3 बहुत एक्सपेंसिव है, बट आज के 50 ओवर गेम में 5.3 इज़ क्वाइट एन एक्सेप्टेबल इकोनॉमी. जिस हिसाब से स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी, अभी एशिया कप में जो गेम्स देखे, वेयर टीम्स वर स्कोरिंग अपवर्ड्स ऑफ 330 340 ऑन अ रेगुलर बेसिस. 6 की इकोनॉमी तो चलती है पूरे गेम में ओवरऑल. सो समवेयर व्हेन यू लुक एट अ 5.13 यू से कि हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है मे बी कंपेयर टू द अदर इंडियन ऑप्शंस दैट वीव काइंड ऑफ गॉट विद अश्विन एंड जडेजा, जो कि 115 मैचेस में 155 विकेट्स लेना. अश्विन, द एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स इनटू दिस टीम, 4.94 की इकोनॉमी, जिस गोज टू शो कि भाई ये सिर्फ विकेट्स नहीं लेता, ये ही इज़ रियली गुड एट बीइंग एबल टू स्टॉप द kind of runs that India might be giving to any other team, which is quite important क्योंकि आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, बट मिडिल ऑर्डर में वेयर टीम्स जनरली लाइक टू प्ले इट स्लो, प्ले इट सेफ, आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो रन्स आपके बचा सके. एंड दैट्स समथिंग दैट अश्विन ऑफर्स एंड जडेजा एज वेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट. 186 गेम्स में विकेट्स 204 ही है सिर्फ, बट इकोनॉमी बहुत अच्छी है. अगेन 4.92, द लोएस्ट ऑफ द इंडियन बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ स्पिन. 37 का एवरेज है, तो कि थोड़ा हाई है, बट एट द सेम टाइम अगेन आपको 2-3 ऐसे बॉलर्स चाहिए होते हैं जो आपको विकेट्स में भी ना दिला पाए, बट आपकी एक जो रन रेट है उसको लो रखें, जो आपकी रन्स पर ओवर है वो कम रखें. एंड टॉकिंग अबाउट स्पिन, वी कांट रियली निगेट अफगानिस्तान एज कि भाई ठीक है, they might not be favorites to win the World Cup, they might not be favorites for the top 4 as well, but if Afghanistan can show up and perform to the pitches, yeah, Rashid Khan, Mohammad Nabi, Mujibur Rahman, they've got great options whether it comes to the experience of Nabi. 147 matches में 154 wickets, 4.2 की economy, 32 का average. It just goes to show that he can constrict the runs over there, and if they need wickets they can always rely on Rashid Khan. What an incredible IPL he's had for the last few seasons. 94 में 172, almost 2 की, again wickets per game kind of thing, average just 19.5, and then economy as well 4.2. So it'll be a force to reckon with. And then the youngster Mujibur Rahman, 166 matches में 93 wickets, 25 के average and 4.1. बहुत सिमिलर कंडीशंस है अफगानिस्तान के जो इंडिया के कंडीशंस होते हैं. सो समवेयर अफगानिस्तानी बॉलर्स विल हैव अ फील्ड डे इन इंडिया. एंड वो ज़्यादा सीरीज़ खेली नहीं उन लोगों ने, बट दीज आर ऑल 3 काइंड ऑफ प्लेयर्स जो हु हैव प्लेड IPL रेगुलरली, राशिद खान बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आउट ऑफ देम ऑल. सो अफगानिस्तान, irrespective of how they do in this tournament, spinners उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड दैट जस्ट गोज टू शो. पाकिस्तान जिसकी पेस अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए भाई 2 स्पिनर्स जो मैंने पिक करे हैं, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, kind of the 2 that I kind of picked out of the hay out of their squad, क्योंकि यही 2 ऐसे एक प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो रेगुलरली परफॉर्म करे हुए हैं. इफ्तिखार अहमद ऑब्वियसली नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर. एक बस दोनों में प्रॉब्लम ये है कि भाई इकोनॉमी बहुत हाई है. 5.8 शादाब खान की, 6.1 इफ्तिखार अहमद की. इन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस इज़ क्वाइट एन हाई इकोनॉमी. एंड इफ्तिखार अहमद ने भी कोई ख़ास विकेट लिए नहीं है. सो पाकिस्तान मे नॉट वांट टू रिलाई ऑन देयर स्पिन बॉलर्स.
पेस बॉलर्स उनके बहुत अच्छे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है उनके पास। पर एट द सेम टाइम अगर स्पिन जैसी चेन्नई जैसी पिच हुई, ईडन गार्डन्स जैसी पिच हुई, बहुत पाकिस्तान स्ट्रगल करने वाला है। वी सॉ इट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दी वार्म अप गेम्स वेयर दे रियली डिड स्ट्रगल काइंड ऑफ इवन डिफेंडिंग 330 विच शुड हैव बीन ईजिली डिफेंडेड अगर उनके बॉलर्स सही से बॉल डालते। टॉकिंग अबाउट स्पिन, England is one other great option, but before we get into England, let's talk about Australia, New Zealand, and kind of the other teams, which I'm going to not maybe mention as much in this kind of video. क्योंकि starting with Australia, Zampa है उनके पास, Glenn Maxwell है, दो great kind of bowlers, but at the same time कोई एक force to reckon with नहीं है कि भाई ये बहुत dangerous bowlers हैं। Zampa maybe somewhere एक दो games में अच्छा खेल जाते हैं, but उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है इंडिया में वेयर आई कैन से कि हाँ दिस इज़ गोना बी डेंजरस बॉलर टू लुक आउट फॉर। एंड ऑस्ट्रेलिया जस्ट लाइक पाकिस्तान रिलाई ऑन देयर फास्ट पेस बॉलिंग अ लॉट मोर देन द अदर काइंड ऑफ टीम्स। एंड जहाँ तक बांग्लादेश की भी बात आती है कि भाई उनके भी फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, उनके पास एक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस शाकिब अल हसन है जो बहुत ज़बरदस्त खेल चुके हैं एशिया कप में। बट एट द सेम टाइम कोई इट्स नॉट वन दैट आई वुड लुक बैक एंड से कि वो माय गॉड दिस इज़ वेरी स्केरी। एंड जहाँ तक बात आती है भाई न्यूजीलैंड की, रविंद्र रचिंद्रा, व्हाट a game. Rachin Ravindra, I keep messing up the name on there, and Will Young जो कि एक काफ़ी यंग बैटर हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग डाल लेते हैं न्यूजीलैंड के लिए, कभी कभार कर चुके हैं। मेरे लिए एजाज पटेल मिसिंग है, आई थिंक उसने ओडीआई इतना खेला नहीं है। इश सोडी एज वेल, इफ आई वांट टू मेंशन हिम देयर एज वेल, जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है। बट समवेयर अगेन आई डोंट थिंक देयर गोना बी अ फोर्स टू रेकन विद आइदर। न्यूजीलैंड की बहुत ही बैलेंस टीम रहती है हमेशा, इट्स ऑलवेज बिन अ टीम जो रिलाई करते हैं अपने सारे डिपार्टमेंट्स वर्क करने पे जस्ट टू गेट द विन एंड टू विन द मैच एंड मे बी द टूर्नामेंट इटसेल्फ। यू नो इट्स नेवर हेविली रिलायंट ऑन लाइक इंग्लैंड, जो कि देर कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड कप थिंकिंग कि भाई हम लोग की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। Pakistan is a very balanced one. India is a very balanced one. Australia, they know they've got a balanced team as well. So somewhere you can't really point out a few players and say कि हाँ these spinners will be great. But England की जहाँ तक बात करें भाई, मोइन अली, आदिल राशिद, लिam लिविंगस्टोन are the kind of three spin options that they will be relying on. Moeen Ali, Adil Rashid, two greatly experienced ODI bowlers, test match bowlers, almost 300 games between them. Adil Rashid, completely a wicket taking bowler, 190 wickets in 120 games is an incredible achievement. 5.6 की economy थोड़ी high है, 6.1 की हो जाती है in subcontinental conditions because obviously इंडिया के साथ काफ़ी सीरीज़ खेली हैं, वो भी दैट बिटवीन द कोविड एरा जहाँ पे अहमदाबाद में काफ़ी गेम्स होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे बॉलर्स में बहुत हाई इकोनॉमी देखी थी बिकॉज वो पिचेस एक ऐसी पिचेस थी जो आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स couldn't hack the settings of that pitch and kind of ball accordingly. मोइन अली जहाँ तक बात करें 132 मैचेस में 106 विकेट्स, 47 का एवरेज, 5.29. इट्स अनदर वन ऑफ दोज बॉलर्स जो कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एंड ऑन हिज गुड डे ही कैन पिक अप अ फ्यू विकेट्स, बट इज़ नॉट समवन दैट यू लुक एट एंड से कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए 4 विकेट लेके आएगा, आज की गेम में 3 विकेट लेके आएगा। लियम लिविंगस्टोन इज समवन इंग्लैंड ने काफ़ी रिलाई किया है ये बायलैटरल सीरीज़ में, वेदर इट्स इन इंग्लैंड वेदर इट्स इन पाकिस्तान एज वेल, जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी। 16 गेम्स में 10 विकेट्स, थोड़ा इनएक्सपीरियंसड है ऑब्वियसली, so कहीं ना कहीं कहना कि he's going to be one to look out for as well is kind of is a long shot as well to think about that as well. And talking about Sri Lanka, they've got a good spinner in terms of Will Lange obviously, जो कि एक is an upcoming spinner, but do I think बहुत impactful रहेगा? नहीं, मुझे लगता है somewhere he'll kind of be neutralized, और teams will be well prepared for players like him, जो कि एक it's not going to be a very high kind of he's not going to have a great kind of tournament जो कि एशिया कप में देखने को मिला था। मे बी वो जो एक अनऑर्थोडॉक्स स्पिन आती है उनकी, वो आई थिंक वो नेगेट हो जाएगी इंडियन पिचेस में और इंडियन कंडीशंस में। करुणरत्ने है, हिमातना है एज वेल, विच आर टू गुड काइंड ऑफ ऑप्शंस एज वेल विद असलंका, जो कि मेजरली बैट्समैन है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बॉलिंग आने वाली है वहाँ से उस एंड से मेरे हिसाब से। और वही है कि भाई ऑप्शंस हैं। और साउथ अफ्रीका की जहाँ तक बात करें कि भाई केशव महाराज, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इज़ अ ग्रेट बॉलर एज वेल। एंड देन इन टर्म्स ऑफ द अदर वन, तबरेज शम्सी, द टू काइंड ऑफ स्पिन ऑप्शंस दे हैव। देव गॉट रासी वैन der Russen, बट इज़ प्राइमरली अ बैटर, तो मैं कहीं ना कहीं उसको थोड़ा आउटसाइड ऑफ द पिक्चर रखूँगा। एंड इफ़ आई हैड टू पिक अ टीम, ऑब्वियसली इंडिया के अलावा कोई और टीम है नहीं इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स, बट इफ़ आई हैड टू पिक समवन अदर देन इंडिया, आई वुड से कि भाई आई वुड से मे बी आई एम लुकिंग एट इंग्लैंड, हुज गॉट अ गुड काइंड ऑफ बैलेंस्ड वन। अफगानिस्तान, बट क्योंकि उनके पास बाकी डिपार्टमेंट्स में इतने अच्छे
प्लेयर्स हैं नहीं जो बैटिंग कैरी कर सके, जो मे बी पेस बॉलिंग कैरी कर सके, विच इज़ वाई वो ऑब्वियसली टॉप 4 में मेरे लिए कंटेंडर्स नहीं लगते. बट इंग्लैंड जो कि बैटिंग ऑप्शंस इतने ज़बरदस्त लेके आए हैं, मे बी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड देन व्हेन यू गॉट दीज 3 स्पिनर्स टू हेल्प यू आउट एज वेल, वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट रियली विल हेल्प देम आउट एज वेल. सो लेट अस नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दिस, एंड डू यू थिंक इंग्लैंड विल बी एबल टू कैपिटलाइज, और डू यू थिंक इंडिया को कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, एंड इंडिया विल बी द काइंड ऑफ आउटराइट favorites to win the World Cup, as well as have the 3 best spinners on there, and how India will line up as well. So make sure you subscribe, make sure you leave a like rating, and we'll see you guys next time.